segment. We'll see the next. Hello. Next segment, that is hematology. Hello. So now we are going to start with a new segment, that is the hematology. In hematology is divided into three important segments. In segment 1, we'll see the RBC related diseases. In segment 2, we'll see the WBC related diseases. And in the last segment, we'll see the platelet diseases. Okay. So today we'll start with the RBC disorders. Okay. So before going into the details of the disorders, we must know that what is normal about any RBC. Okay? So what are the normal parameters of RBC, so that we can understand that what will be the abnormality of any RBC. Okay? So let's see RBC shape is, all of us know what is the shape of RBC. It's a biconcave. It's a biconcave shape. It's a biconcave shape. Okay. So why only this biconcave shape is given to the RBC? Why not any other shape? Because this shape is highly flexible and foldable. It's a foldable, moldable, highly flexible cells, so that they can easily traverse even the smallest blood vessels. Okay. So that's why this kind of shape is given. RBC size 7.5 micron is its size. Okay. Then comes its count, RBC count. Just for question purpose, I'll tell you that it is around 4.5 to 5.5 million per mm cube. So the shape is biconcave, the size is around 7.5 micron, and count is around 4.5 to 5.5 million. And remember, normally males used to have more RBC as compared to females. And that's why hemoglobin concentration is also more in males as compared to the females. So males used to have 14 to 16 gram per deciliter hemoglobin concentration, while females used to have 13 to 15 gram per deciliter. So this is for male and this is for female. Okay. So these are the normal parameters which we must know, so that we can now understand what abnormality could be seen in any RBC. So what will be the condition called as anemia? What is its definition, or what is the criteria to diagnose this condition? Anemia. RBC will have only two important things. It can have anemia or it can have polycythemia. Okay.
So when count is reduced, it is called as anemia. When count is above the normal range, it is called as polycythemia. So first of all, we'll see the anemia. So what will be the definition of anemia? So hemoglobin concentration should be less than 12 gram per deciliter, then it will be called as anemia. So this is a simple definition. Hemoglobin, if it is less than 12 gram per deciliter, is called as anemia. In pregnancy, hemoglobin should be less than 11 gram per deciliter to call it as anemia. So a definition of anemia is same for male and female. While you are considering it as a criteria, then male and female both have the same criteria to call it anemia once it is below 12 gram per deciliter. But for pregnancy, it is different. So for pregnancy, it is less than 11 gram per deciliter. Okay. Now we'll see what is the classification of anemia. What are the different types of anemia that can be there? So based on the size of RBC, or you can say based on the morphology of RBC, the anemias are divided into three important types. One is called as microcytic hypochromic anemia. Microcytic hypochromic anemia. The second category is called as normocytic normochromic anemia. And the third one is called as macrocytic normochromic anemia. Macrocytic normochromic anemia. And what is the basis of this classification? The basis is morphology. Based on morphology or based on RBC indices. Based on RBC indices. So this classification is based on RBC morphology or RBC indices. So what are the indices? So indices, we'll see the three important indices: MCV, MCH, and MCHC. So these are the three important RBC indices. So according to these RBC indices, we can differentiate anemias into three categories. One is microcytic, second is normocytic, and third one is macrocytic. So let's see what is microcytic. What you are going to see in microcytic hypochromic anemia. In these cases, microcytic hypochromic anemia, we are going to see small size RBC. Small size RBC. Okay. In normocytic anemias, we are going to see the normal size RBC. And in the third one, that is macrocytic, we are going to see the large size RBCs. Okay, now tell me, like this is the RBC. Now tell me, is it a normal size RBC, large size RBC, or small size RBC? It appears normal. नॉर्मल लग रहा है या छोटा लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है. ओके, चलिए अब बताइए. ये वाला जो आरबीसी है फर्स्ट वाला, इज इट नाउ नॉर्मल, स्मॉल और लार्ज? ऐसे नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे? ऐसे नहीं पता चलता है. चलिए चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल लेंगे, इस पर बता दोगे सर.
ये क्या है, ये स्मॉल है, और बीच वाला क्या है, बीच वाला नॉर्मल है। बीच वाला स्मॉल नहीं लग रहा पहले वाले से, सिंपल है ना। देखो ये लार्ज है और ये नॉर्मल है और ये स्मॉल है। चलिए एक और एग्जांपल, आपको ऐसा नहीं समझ पा रहा, डायग्राम से नहीं पता चलेगा। It is very important to understand that how you are going to measure the size of any RBC, because this problem will be there in exam also. Okay, like एक और RBC बना लेते हैं। चलिए अब बताओ, वो स्मॉल है, अभी आपने बोला इससे पहले वाला स्मॉल है, अब आप बोलो ये भी स्मॉल है, very small. So important thing is that if you are comparing the size of RBC with any other RBC, then you are wrong. That's why you cannot measure the size of any RBC if you are comparing it with the other RBC. So you have to compare it with one cell that is not going to change its size in various diseases. Okay, and the size of that cell should be like our normal RBC. Okay, so if the RBCs are smaller than that cell, then RBC becomes smaller size. If RBCs are larger than that cell, that means RBC are actually larger. And if RBC size is similar to that cell, that means our RBCs are of normal size. So you have to compare the size of RBC with some other standard cell which is not going to change its size in different kind of anemia. तो आरबीसी की कंपैरिजन आरबीसी से कभी नहीं करना है। तो कौन है वो जिससे कंपेयर करेंगे? ये आया वो, what is this? This is small lymphocyte. So you have to measure the size of RBC as compared to small lymphocyte. The small lymphocyte size is equal to, small lymphocyte usually have size equal to normal RBC. अब आप कोई भी सेल बना के दिखा तो मैं बता दूंगा वो छोटा है या बड़ा है. Now you can assume that the first two cells are actually both are microcytic. अब आप कैसे बता सकते हो दोनों ही microcytic है? Because they are smaller than the lymphocyte. The middle one is actually normocytic. Why? Because its size is equal to the size of small lymphocyte. And this one, the rightmost, here the size of RBC is bigger as compared to the lymphocyte. So that's why they are called as macrocytes. So whenever in PBF, whenever in peripheral blood film, if the picture is given to you in your exam and they are asking that what kind of RBCs are there, whether they are microcytic, macrocytic or normocytic, then you have to see first of all which cell? The lymphocyte. So in that photograph, you have to search first of all the lymphocyte, small lymphocyte. Okay, and how you will appreciate the small lymphocyte? Because it is a nucleated cell, it will be having a blue color round nucleus. So you have to find out the blue color round nucleus where it is. If it is there, then you have to compare the size of RBCs which are near to that lymphocyte. Okay, and then you will make out, okay, all the RBCs which are near to this lymphocyte, they are smaller than this, that means they are microcyte. If they are larger than this, that means they are macrocytes. So that's how you are going to say whether it is micro, macro or normocytic. ठीक है, तो अब आगे से कभी आरबीसी को आरबीसी से कंपेयर मत करना, नहीं कोई भी आंसर नहीं आएगा. फिर आपका वो छोटा है, ये बहुत छोटा है और ये उससे भी छोटा है. ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इफ दे आर नॉट गिविंग यू अ picture,
if they are not giving you a picture of peripheral blood film in the exam, then what they can give you so that you can identify whether they are micro, normo, or macro. The thing is MCV. They will give you the MCV. MCV, that is mean corpuscular volume. Normal value is around 80 to 100 femtoliter. Normal value is 80 to 100 femtoliter. So what happens to MCV in microcytic picture? It will be decreased. When it is normocytic, the MCV value remains normal. And when it is macrocyte, then the MCV will be increased. So decrease means less than 80. Normal means in between 80 to 100. And increase means it is more than 100. So in simple words, mean corpuscular volume is proportional to the size of RBC. If RBC size is reduced, then MCV is reduced. If RBC size is increased, then MCV is increased. If RBC size is normal, then MCV will be normal. Okay? Simple, hai? And MCH and MCSC usually follows the MCV. MCH and MCSC, what they signifies the average concentration of hemoglobin in RBC. Okay, so MCH and MCSC, if they used to follow the same thing, okay, so remember MCHC values will follow the MCV only, but MCSC value cannot exceed its maximum range. Okay, if the maximum range is 32 to 36, then it will not raise above the 36. This is important. So it will be normal, it will be high. Sorry, it will be normal or it will be low. Okay, it will not be high above its normal range. Okay, this is important. MCSC क्या हो सकता है, या तो कम होगा या नॉर्मल रहेगा, लेकिन अपनी नॉर्मल रेंज को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा. क्यों? What MCSC suggests? MCSC suggests that in one average RBC, how much hemoglobin can be filled there. एक RBC में आप कितना hemoglobin भर सकते हो? यार एक लेवल ही तो होगा ना. Getting my point? तो एक उसकी एक रेंज होनी चाहिए ना, उससे ज्यादा तो नहीं भर सकते उसके अंदर. जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा एक आरबीसी के अंदर आप मैक्सिमम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन भर सकते हो, तो उसकी रेंज क्या हो गई, मान लीजिए 5 से 10 के बीच में. अब उससे ज्यादा तो नहीं भर सकते, तो इसलिए एमसीएससी कभी भी अपनी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्यादा आप उसमें हीमोग्लोबिन डाल नहीं पाओगे. सो दैट्स व्हाई इट विल रिमेन नॉर्मल और डिक्रीज. इट विल नॉट बी एक्सीडिंग इट्स नॉर्मल रेंज. सो ये बात याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नॉर्मल है. Even if MCV is increased, MCH is increased, but MCSC remains normal in macrocytic anemia. Otherwise, it will follow the MCV. Got my point? Okay. Normocytic normal. अच्छा, इसमें decrease कर दी. Sorry. Here it will remains normal. Okay. Right? It is normal because it follows the MCV. Okay. So it will be normal. So change it. It is not decreased. It is normal because there are the normocytes. Normal size are this. So MCH remains normal, MCSC remains normal, and MCV also remains normal. तो एक ऐसा कैसा एनीमिया हो गया जिसमें आरबीसी की साइज भी नॉर्मल रही, आरबीसी का हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहा. तो फिर ये एनीमिया हुआ कैसे? कैसे एनीमिया हुआ? अगर आरबीसी का साइज भी वही दिख रहा है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन भी उतना ही है जितना नॉर्मल आरबीसी में हो सकता है, तो ये एनीमिया क्यों हुआ? Very good, because the number of RBC is decreased here, and the remaining RBCs which are there in our body, they are just like our normal RBC. So this is the picture of the normal RBC which are remaining there after the
the other RBCs are dead or hemolyzed or they have been exited the body. या तो वो ब्लड लॉस में चले गए हैं बाहर या फिर उन आरबीसी का हिमोलिसिस हो गया है इसलिए वो आरबीसी है नहीं, इसीलिए उनका क्या हो गया है, आरबीसी काउंट कम हो गया है, टोटल हीमोग्लोबिन कम हो गया है। बट जो आरबीसी पीछे बच गई हैं उनकी साइज कैसी है, जैसे नॉर्मल आरबीसी होती है उतनी ही है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, जैसी एक नॉर्मल आरबीसी में होती है उतनी ही होती है। तो दैट्स व्हाई हियर इन द नॉर्मोसिटी कैटेगरी what could be the cause? The importance is what could be the cause of normocytic category? It will be a hemolytic anemia. It will be hemolytic anemia. First of all, it will be hemolytic anemia. Hemolytic anemia. Second thing, aplastic anemia, when bone marrow is suppressed, bone marrow is completely shut down, so bone marrow is not able to produce RBC. Bone marrow is not able to produce RBC. So if bone marrow is not able to produce RBC or less RBC, so the RBC which are there, they will be of normal size. भाई कम प्रोड्यूस कर रहा है ना, लेकिन जो कर रहा है या जो भी आ रही है वो कैसी दिख रही है, नॉर्मल जैसी दिख रही है, इसलिए उनका एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी नॉर्मल होगा। या फिर हिमोलिटिक एनीमिया होगा, यानी जो सेल्स डैमेज हो गई वो तो दिख नहीं रही है आपको, आपको क्या दिख रहा है, जो बची हुई आरबीसी दिख रही है, और जो बची हुई आरबीसी वो कैसी है, नॉर्मल जैसी है। ओके, द थर्ड थिंग, द ब्लड लॉस। ओके, तो ब्लड लॉस होने से टोटल आरबीसी काउंट कम हो गया, टोटल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो गया, बट जो आरबीसी बची है वो कैसी है, नॉर्मल जैसी। ओके, so these are the three very important causes of normocytic normochromic anemia. Okay, now let's see what are important causes of these microcytic anemias. बताइए, iron deficient anemia, IDA, sideroblastic anemia, very good. Thalassemia, very good. Thalassemia. Anything else? Anemia of chronic diseases, very good. Anemia of chronic disease. Okay, and what comes in the microcytic category? Megaloblastic anemia, very good. Megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia. Is there any non-megaloblastic cause of macrocytes? What are the non-megaloblastic cause of macrocytes? One is hypothyroidism. Hypothyroidism patient will also have the macrocytes, but that is not a megaloblastic anemia. Okay, so that is again important question. Then comes chronic liver diseases. Chronic liver diseases also show macrocytes, but that is not megaloblastic anemia. Alcoholism and few cases of aplastic anemia. Few cases of aplastic anemia also comes in this category. यानी aplastic anemia usually normocytic normochromic होता है, but कुछ cases उसके macrocytic वाले भी हो सकते हैं. Okay. So these are the important differential diagnosis of various anemias. Like if microcytic category is there, then it can be a case of IDA, it can be a case of sideroblastic, thalassemia, and anemia of chronic disease. In normocytic category, we have hemolysis, we have aplasia of the marrow, and we are having the blood loss. Then comes the macrocytic, where we are having only one important anemia,
that is the megaloblastic anemia. And the rest of the non-megaloblastic causes of macrocytes are hypothyroid patients, chronic liver disease patients, alcoholism history, and few cases of aplastic anemia. Okay, so let's see one by one what are these anemia, how you are going to differentiate these anemia from the rest of the anemia in the same category. जैसे IDA को आप कैसे sideroblastic से, कैसे health से, कैसे anemia chronic disease से differentiate करोगे? क्यों? क्योंकि PBS में तो एक जैसा दिखेगा. In the PBS you will see the microcytic picture. Or MCV, MCH, and MCSA are also similar in all these cases. Then how we are going to differentiate these entities? Okay? क्योंकि केवल माइक्रोसिटिक बोलने से काम नहीं चलेगा. आपने किसी पेशेंट को बोला आपको तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि you cannot start the treatment. You will start the treatment once you know the exact cause of the anemia. केवल एनीमिया कहने से काम नहीं चलता. केवल एक सीबीसी करवा लिया जिसमें हीमोग्लोबिन कम आ गया तो उससे आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे. तो सीबीसी कराने के बाद, कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के बाद अब आप ऐसा क्या करवाओगे जिससे कि आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस पर पहुंचोगे और उस डायग्नोसिस के बाद क्या करोगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे. ओके, तो लेट्स सी हाउ we are going to approach for different types of anemia. So we'll start with the most basic one, the most common one, the IDA. Iron deficient anemia or iron deficiency anemia. So first of all, it is one of the most common nutritional anemia in the world. It is most common nutritional anemia in world. The second thing, what can be the cause of this anemia? How an individual become deficient of iron? कैसे हो सकता है deficiency? Malnutrition, absorption. Very good. Anything else? Blood loss. Very good. One of the very important causes, blood loss also. So one of the most common cause is dietary deficiency. Like in developing countries, in poor countries, there will be a diet is deficient in iron. So that's why individual suffers from iron deficiency anemia. So this is one of the most common cause of IDA, that is the dietary deficiency, and specifically in the developing countries. Okay. Second thing, the blood loss. Second important cause is blood loss, specifically in the developed countries. In the developed countries, there will be a blood loss will be more significant as compared to dietary deficiency. Okay, blood loss will be in form of prolonged menses. So excessive blood loss during the menses. Then there can be a hemorrhoids. Okay, there can be GI cancers which used to bleed. GI cancers. Okay. And any other type of chronic blood loss history. किसी भी वजह से अगर chronic blood loss हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी. एक्यूट में नहीं होगा, किस होगा, chronic में होगा, लंबा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा आयरन का डेफिशिएंसी. Okay, so GI cancer is one of the very important cause. ओल्ड एज में अगर 70-80 का मेल है कोई और उसको अनएक्सप्लेन सीवियर आयरन डेफिशिएंट एनीमिया है, अगर किसी ओल्ड एज मेल में या फीमेल में अनएक्सप्लेन सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन यू हैव टू सी फॉर जीआई कैंसर. और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. तो जीआई के जो कैंसर होते हैं यूजुअली बहुत कुछ सिग्निफिकेंट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके, सो they will have what? They will have the bleeding inside the GI tube, and that will be a small amount of the bleeding. So 2 महीने 3 महीने तक अगर bleeding होती रही तो पेशेंट को एनीमिया होता जाएगा.
70 ईयर का है तो डाइट का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइट तो ठीक ले रहा होगा उसको। अगर वो डाइट ठीक ले रहा है उसके बाद भी उसको अगर एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंट, then always we have to think about the malignancy which is there in the GIT, like colonic cancer. Colonic cancers are common to bleed lot, okay? और वो लंबे टाइम तक ब्लीड करते हैं तो पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो कई बार आप एनीमिया को पकड़ोगे तो आप उस डिजीज को भी पकड़ पाओगे आसानी से। GI कैंसर। नेक्स्ट इज द माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कहां से एब्जॉर्ब आयरन होता है हमारा? आयरन एब्जॉर्प्शन साइट इज duodenum. Duodenum is iron absorption site. तो कोई भी डिओडिनल डिजीज होगा तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी के चांस बनते हैं, ठीक है? तो कौन सा डिजीज है माल एब्जॉर्प्शन वाला जो डिओडिनम को अफेक्ट करता है? सीलिएक डिजीज, वेरी गुड, सीलिएक 2 और सीलिएक डिजीज। ओके, even there are certain parasites which used to infect these areas, duodenal areas. What is that parasite? Hookworm, very good. So that can also produce the lesion. Hookworm or ankylostoma, ankylostoma duodenale, ankylostoma duodenale, नाम में छुपा हुआ देखो duodenale, तो ये duodenum को अफेक्ट करता है। Even if the acid is reduced, if the hydrochloric acid which is there in the stomach, if it is reduced, then also the absorption will become defective. Okay, because hydrochloric acid is required for iron absorption. तो कैसा होगा? जैसे गैस्ट्रेक्टोमी की, if there is a gastrectomy being done, then patient will have the malabsorption of iron. Okay, इसीलिए कहते हैं कि मिल्क के साथ, ठीक है, क्योंकि मिल्क क्या है? मिल्क इज एल्कली, सो एल्कली लोगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है। दैट्स व्हाई आयरन टैबलेट्स हैज टू बी टेकन विद विटामिन सी, बिकॉज़ दैट इज द ascorbic acid. So these are the important causes: dietary deficiency, blood loss, and malabsorption. So now let's see what will be the sign and symptoms related to the iron deficient anemia. ऐसे कौन से फीचर्स है जो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में स्पेसिफिकली मिलेंगे? ऐसा कोई है फीचर? है स्किन, स्किन पेल हो जाएगी, केवल आयरन डेफिशिएंसी होती, बाकी से नहीं होती, तो सारे एनीमिया हो गए ना। Spoon shaped nails, very good. So spooning of the nails, that is koilonychia, koilonychia, that is spoon shaped nails. Then comes the esophageal web formation, esophageal web formation, that is the fibrosis of the esophagus, fibrosis of the esophageal wall, and angular glossitis or cheilitis. So when tongue is inflamed or angles of mouth are inflamed, that is called as angular cheilitis. So these features are seen in iron deficient anemia, and these features used to be seen in one syndrome also. What is that called as? Plummer-Wilson syndrome or Peterson-Kelly syndrome. Plummer-Wilson syndrome or Peterson
Kelly syndrome. So which type of syndromes are associated with iron deficiency? The Plummer-Wilson or Peterson-Kelly. So patient will have esophageal web formation, glossitis or angulotylitis with iron deficiency that will result in Plummer-Wilson syndrome or Peterson-Kelly syndrome. Koilonychia is also one of the findings in iron deficient anemia patients. Then comes pica or pica. That is also one of the finding of the iron deficient anemia, specifically in the children. क्या होता है ये? मिट्टी खाने वाला बच्चा, ice cube खा सकता है, और okay, so it is eating non-edible, non-nutritious substance. Okay, so iron deficiency will lead to a psychological urge to eat these things, like they used to eat sand, chalk, cement, ice cubes. So they are not nutritious, okay, and they are not edible also, but still they are eating it. That is called as a pica string. देखो ना बचपन में बच्चे स्कूल में जाते हैं, चौक खा लेते हैं, सीमेंट जो होता है इसमें से उसको खरोचते रहते हैं, सीमेंट निकाल लेते हैं दीवार से, उसको खा लेते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, सो दे फील सेटिस्फाइड, और पेरेंट्स को लगता है कि शायद बच्चा कैल्शियम का डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि वो चौक खा रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि चौक में तो कैल्शियम होता है, इसका मतलब बच्चे को किसी कमी हुई है, कैल्शियम की कमी है इसमें, तो वो उसको कैल्शियम की टेबलेट भी दे देते हैं कि ये खा ले, जबकि इट्स अ साइकोलॉजिकल desire. So it is not due to the calcium deficiency, actually it is due to the iron deficiency. So these children should be given the iron supplement instead of the calcium. So these are the specific features. I am not talking about the non-specific features like pallor, tiredness, easy fatigability. All these features will be seen in any kind of anemia. So that is not particularly common in the iron deficiency anemia. Here, these are the features which are particularly common in the iron deficiency anemia. Okay. Next is how we are going to diagnose the entity. Diagnosis. अब diagnosis की तरफ बढ़ते हैं. Diagnosis कैसे करें? बुक्स में तो लिखे होते हैं इतने सारे साइन एंड सिम्टम. एक्चुअली जब पेशेंट आता है तो ये सारे मिलते नहीं है. ऐसा नहीं है कि पेशेंट आएगा तो कोइलोनिकिया, ग्लोसाइटिस और सब इसोफेजियल वेब लेके आएगा आपके पास. ये देखो मेरे को ये सब है और अब मुझे आईडी डायग्नोस करो, ठीक है. तो यूजुअली आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा. हो सकता है कभी कोइलोनिकिया मिल जाए, ठीक है. सो बहुत कॉमन नहीं है कि सब पेशेंट में ही मिलेंगे. तो माइल्ड डेफिशिएंसी जैसे किसी का हीमोग्लोबिन 8 है, 9 ग्राम है, तो उसमें सारे फीचर्स आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे. तो कैसे पहुंचे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? सो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, क्या करना चाहिए? सबसे पहले चलिए सीबीसी कर रहा था. सबसे पहले द इजीएस्ट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट विल सी क्या मिला. कंप्लीट ब्लड काउंट में हमको क्या क्या मिलता है? हम आरबीसी देखते हैं इसके अंदर काउंट को. विल सी द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, विल सी एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी and RDW. These are the parameters which we can appreciate in any kind of CBC. Okay, we can also see the WBC count and platelet count. Okay, but here we are restricted to anemia, so I am telling you only about the RBC parameters. So RBC will be decreased, hemoglobin will be decreased. इन दोनों को देखकर हमें क्या पता चला? पेशेंट को क्या है? एनीमिया पता चला. कितने पता चला? इसके बाद हमने देखा एमसीवी कॉल किया, एमसीएच लो, एमसीएससी लो. इससे क्या पता चला कि ये क्या है? माइक्रोसिटिक है. माइक्रोसिटिक एनीमिया पता चला. तो पहले हीमोग्लोबिन को देखते ही पता चल गया कि एनीमिया है, और एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी को देखा तो पता चला माइक्रोसिटिक. आरडीडब्ल्यू क्या बताता है? ये क्या होगा? इंक्रीज होगा.
है इंक्रीज। आप बोल रहे हो मैंने मान लिया इंक्रीज होता है, मतलब क्या हुआ इसका इंक्रीज क्यों हुआ है? व्हाट इज सिग्निफाइज, व्हाट इज आरडीडब्ल्यू? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ओके, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बता रहे हो, मतलब क्या हुआ इसका? ये इंग्लिश बात होगी। साइज, ओके चलिए सिंपल वर्ड में बताते हैं। इट इज अ वेरिएशन इन साइज ऑफ सेल। इट सजेस्ट अस वेरिएशन इन साइज ऑफ सेल। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा सेल के साइज में उतना ही आरडीडब्ल्यू बढ़ेगा, वेरिएशन नहीं होगा तो ये नॉर्मल रहेगा। ओके, तो यहाँ मैंने बढ़ाया है, इसका मतलब क्या है? विल हैव द डिफरेंट साइज माइक्रोसाइट्स। जैसे मान में बताएं, जैसे मान लीजिए ये लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो जब इसका हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखेंगे आईडी का, तो आपको इसमें आरबीसी ऐसे मिलेगी। You can see these all are the small RBCs, but all have the different size. So this variation in size is important for RDW. So RDW will tell you the variation in size. अगर सारी की सारी इतनी छोटी छोटी भी होंगी ना, बट ये इनमें क्या है? RDW नॉर्मल है। क्यों? बिकॉज सबका वेरिएशन कुछ भी नहीं है। सारी की सारी बड़ी हो जाए और एक जैसे दिखे तो भी कोई वेरिएशन नहीं है। So it is important that the variation in size is more in IDA. So that's why RDW will be increased. And this word is also called as anisocytosis. अगर ये भी पूछा जाए in which condition anisocytosis is more, IDA it will be more. Which parameter in CBC suggests about the anisocytosis? That is the red cell distribution rate. Which parameter suggests the variation in size of the RBCs? That is again RDW. तो अभी तक हम कितनी बात पर पहुंचे कि पेशेंट को क्या हो गया है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया। अभी तक इतना ही पहुंचे। तो ये तो किसमें भी हो सकता है, ये तो आईडीए में भी हो सकता है, सिड्रोब्लास्टिक में भी हो सकता है, ये हेल्थ का केस भी हो सकता है, और ये केस एनीमिया क्रोनिक डिजीज का भी हो सकता है। अब आगे कैसे बढ़े? अब क्या करें? ये सर क्या करें? सीरम पेनिट्रेट। But remember, whenever you will get the abnormal CBC report, always it has to be confirmed on peripheral blood film. Okay, so हमेशा CBC के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाएंगे हम उस ब्लड की, और उसको देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि वास्तव में ही आरबीसी छोटी साइज की है नहीं। हो सकता है मशीन ने गलत रिपोर्ट दे दी है। गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है कि मशीन ने गलत रिपोर्ट दे दी। So we have to confirm always the abnormal CBC report. कैसे गलत दे सकता है? कैसे गलत दे सकता है ये रिपोर्ट? मान लीजिए कि आरबीसी जो थी क्लम्प्स के फॉर्म में बन गई, छोटी छोटी आरबीसी थी, और उन आरबीसी ने क्लम्प बना लिया गलती से, और क्लम्प बन गया, और क्लम्प जैसे ही उस मशीन के अंदर गया, उस मशीन को लगा ये कोई बड़ी आरबीसी आई, तो 4 आरबीसी को उसने एक आरबीसी समझ लिया, और उस आरबीसी का एवरेज वो वॉल्यूम ज्यादा नहीं। तो हो सकता है कि पिक्चर तो माइक्रोसिटिक थी और एमसीवी उसका 110 पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि उस ब्लड के अंदर क्या थे? आरबीसी के क्लम्प्स थे। So whenever RBC clumps are there, then those RBC clump will be read like a 1 RBC by that machine. Okay? मशीन में क्या होता है? एपर्चर होता है, उस एपर्चर का जो डायमीटर है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो जब मशीन के अंदर वो आरबीसी जाएगी तो उसका एपर्चर का साइज और आरबीसी का साइज अगर सेम है तो वो उसको 7.5 काउंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये एक साथ 4 आरबीसी गई इसके अंदर तो इसको ज्यादा इंपीडेंस फील होगा। तो क्या होगा? ज्यादा इंपीडेंस फील होगा, और ये इसका एमसीवी बढ़ाकर बताएगा। Got my point? So that's how the machine used to measure the size of the RBC. So machine can be wrong sometimes, not always, can be wrong sometimes. So
So it has to be confirmed by making a peripheral blood film. So अब इसमें next step क्या करेंगे हम हमेशा peripheral blood film को देखो, उसके बाद आगे को सोचेंगे. So we have to make a peripheral blood film. और उसको smear भी बोलते हैं. It is also called as peripheral blood smear formation. क्या करना है, एक छोटा ब्लड का ड्रॉप लेना है, स्लाइड पर डालना है और दूसरी स्लाइड की हेल्प से एक स्मीयर बनाना है, थिन स्मीयर बनाना है. Okay, and then we have to stain the smear and then we'll see the smear under the microscope. So what stain we are using here? That is again the question. Which stain is used in hematology? The most common routine stain of the hematology. Here we are using the Romano-Wesky dyes. So in the hematology is completely a different branch from the histopathology. In histopathology we are using the HNE stain, but it is not used here. In the hematology, to stain the peripheral blood smear, we are using the dyes that are called as Romano-Wesky dyes. We are having different types of Romano-Wesky dyes, like we are having the Jimsa, we are having Leishman, we are having Jenner, we are having field stain. So all these are the different types of Romano-Wesky dyes. We can use any of these. Okay, any of these can be used. कोई भी एक यूज, सारे मत गिरा देना सॉरी. ठीक है, होली नहीं करनी इसमें. So Jimsa is the best one. Is considered one of the best dyes to stain the peripheral blood smear. Okay. So ये तो बात हो गई स्टेन कौन सा यूज करोगे हेमेटोलॉजी में. रोमानो-वेस्की डाइज करना है. अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन देखना है दिया हुआ है एग्जाम में तो वो आपको टिक करना है. चलिए अब देखते हैं हम स्मीयर में क्या दिखेगा. इसमें आरबीसी कैसे दिखेंगी, है स्मॉल आरबीसी दिखेंगी. स्मॉल आरबीसी. सो ये क्या है, हाँ लिम्फो मैंने नहीं बताया. लिम्फो बना था तो लिम्फो से छोटा होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना है that it should be smaller than the lymphocyte. Okay, तो मैं assume कर रहा हूँ कि पास में एक lymphocyte है और ये उससे छोटा है. तो इसमें ये बीच में क्या है, what is there, what is this cell tells us in from the center point. In the center you can see there is no stain, there is no color. What is this thing called as? This is called as central pallor. Is it normal or is it abnormal? Central pallor is normal or abnormal? Central pallor is normal if it is occupying 1/3 area of the RBC. But here it is not 1/3. Here it is more than 1/3. So here it is not normal. Here it is a large central pallor area. Or central pallor is increased. That is called as hypochromia. So remember, central pallor. What is normal central pallor when it is less than 1/3? But here it is more than 1/3 central pallor. So that's why it is called as hypochromia. So for microcytic we have to compare it with the lymphocyte, and for hypochromia we have to see the size of the central pallor. If central pallor is 1/3, then it means it's a normochromia. Okay. If the central pallor is larger than 1/3, it is called as hypochromia. Okay. और hyperchromia कुछ होता नहीं. Hyperchromia होगा तो anemia कैसे होगा? Okay. So this is a hypochromic and microcytic RBC. So we have confirmed on the smear also that the MCV is right. If MCV is low, then here also the RBC size is smaller. Okay. In sometimes you will see the pencil shaped cells also in these anemia. Pencil shaped RBC in iron deficiency anemia. So both kind of RBCs we can appreciate in peripheral blood film of the iron deficiency anemia. That one is microcytic hypochromic, another one is the pencil shaped cells. Okay. Second thing,
What happens to WBC? WBC remains normal. WBC कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, इसलिए WBC नॉर्मल रहता है. Platelet. Platelet count can increase. So here there is a thrombocytosis. So whenever iron deficiency is there, then patient used to have reactive thrombocytosis. Patient used to have reactive thrombocytosis. Means bone marrow is having more and more platelets. Bone marrow is making more platelets. So those platelets are released into the peripheral blood from the bone marrow whenever there is a iron deficient anemia. So this is a reactive thrombocytosis. आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारी फीमेल्स में प्लेटलेट काउंट थोड़ा ज्यादा मिलता है, जैसे 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक मिलना चाहिए, तो कई बार उनके अंदर 5 लाख 5.5 लाख मिलता है. क्यों मिलता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल यूज टू हैव द iron deficiency anemia because of the menses. Okay, so that's why they used to lose the blood every month. So that's why most of the females used to have some mild type of the iron deficiency anemia. So that's why their platelet used to remain towards the higher side. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, केवल और केवल आयरन सप्लीमेंट लेंगे तो the platelets will become again normal. नेक्स्ट थिंग, अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? केवल माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तक पहुंचे हैं. अब आगे बढ़े और अब बताइए क्या करें. अब हमने कंफर्म कर लिया जो सीबीसी बता रहा था वही पीपीएफ भी बता रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now we'll move to the biochemical tests. Biochemical test will confirm okay it's a iron deficient anemia, because now we have to focus on the iron status of that patient. So how will measure the iron status of that patient? By a biochemical serological test. Okay, so we'll go for serum iron, serum ferritin, serum TIBC, that is total iron binding capacity. Total iron binding capacity. Total iron binding capacity. Total iron binding capacity. Then serum transferrin saturation. Serum transferrin saturation. So these are the important iron parameters which we have to assess to finalize that it's okay, it's a iron deficient anemia. So what happens to serum iron levels? Decrease है, increase है? Decrease है, simple है ना, iron deficiency है. Ferritin decrease है, and serum TIBC is inversely proportional to ferritin. Serum TIBC is inversely proportional to ferritin. TIBC का मतलब क्या हुआ? Total iron binding capacity. किसकी कैपेसिटी है ये? आयरन को बाइंड करने की. वेरी गुड. कौन है वो जो आयरन से बाइंड होता है? कौन आयरन से बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन. Transferrin. Transferrin is the transporter of the iron. So actually it is the capacity of the transferrin. ट्रांसफेरिन आयरन से बाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ज्यादा बाइंड होगा या कम बाइंड होगा, उसकी कैपेसिटी को मेजर करने का तरीका क्या है? टीआईबीसी. ठीक है, बिकॉज ट्रांसफेरिन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते ब्लड में, इसलिए हमने उसकी कैपेसिटी को मेजर किया. तो यहाँ पर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा या नॉर्मल रहेगा? बढ़ जानी चाहिए, कंपनसेशन करना चाहिए ना, बिकॉज इफ आयरन इज लेस देन द ट्रांसफेरिन शुड अटैच टू आयरन कंप्लीटली. अगर मान लीजिए आयरन के 10 मॉलिक्यूल भी पड़े हैं
तो ट्रांसफेरिन क्या चाहता है कि 10 के 10 मॉलिक्यूल से मैं बाइंड करूं और उनको सबको कहां ले जाऊं, बोन मैरो में ले जाऊं और वहां पर इससे मैं हीमोग्लोबिन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या किसका नेचर है, ट्रांसफेरिन का नेचर। तो ट्रांसफेरिन to compensate this anemia, to compensate this iron deficiency, transferrin used to increase its capacity. That's why TIBC will be raised. So what is TIBC? It is the capacity of transferrin to bind with iron. Okay, so transferrin नहीं चाहता कि कोई भी iron का molecule ऐसे ही blood में पड़ा रह जाए और वो bone marrow तक ना जाए. So transferrin try to bind with every molecule of the iron which is there, so that it can carry it to the bone marrow, and now it will make a hemoglobin out of this iron molecule. That is the function of the transferrin. So this is the capacity of transferrin to bind with iron. Okay, now what will happen to transferrin saturation? Increase or decrease? Decrease. Saturation क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. क्यों? देखिए, इसने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है. Transferrin wants to bind with every molecule of the iron. ओके, मान लीजिए इसके पास 3 वैलेंसीज है. जैसे मान लीजिए ये हमारा फेरेटिन है, सॉरी ट्रांसफेरिन है. मान लीजिए इसकी 3 वैलेंसीज हैं, इसके 3 आर्म हैं. ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको सैचुरेट करना है. सैचुरेट कैसे करेंगे? कंप्लीटली सैचुरेट कब होगा? जब इसकी तीनों वैलेंसीज पर कौन आके बैठ जाएगा? आयरन आके बैठ जाएगा. तो इसने तो अपने तीनों हाथ फैला रखे हैं कि आओ और बाइंड हो जाओ. इसने कहा मैंने अपना एक भी हाथ अपनी जेब में नहीं रखा. मैंने कोशिश की कि जितने भी मेरे हाथ में मैं सब फैला लूं ताकि जितना भी आयरन है सब मुझसे बाइंड हो जाए. प्रॉब्लम क्या है? सामने आयरन है ही नहीं, तो हाथ कितना भी फैला ले ये सैचुरेट हो नहीं पाएगा. So that's why transferrin saturation will be fall because of non-availability of iron. So due to non-availability of iron, all the valencies of a transferrin cannot get saturated by the presence of iron, so the saturation will fall. It has increased its capacity, but the saturation is not possible. Okay? एक और टेस्ट नया आता है, सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एसिड. सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एसिड. This is also one of the very good tests nowadays. Serum transferrin receptor acid. Is it increased, decreased, or normal? Increased. It is increased. Why? Because transferrin used to increase its capacity. Okay. So transferrin receptors are present on which cells? Transferrin receptors are present on the bone marrow cells, so that they can bind to transferrin. Okay, once transferrin with iron comes to the bone marrow, in the bone marrow cells will bind with that transferrin with the help of transferrin receptors that are present on the bone marrow cells. So now, what will happen to those transferrin receptors? Whether they are going to increase the number or whether they are going to decrease their number. भाई जब ट्रांसफेरिन अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर भी क्या चाहेगा कि कोई भी ट्रांसफेरिन मेरा ऐसा ना रह जाए जिससे कि मैं बाइंड ना कर पाए. मान लो सामने से 5 ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, 5 ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं और मेरी सेल के ऊपर 2 ही रिसेप्टर है, तो यानी मैं 2 ही ट्रांसफेरिन को अंदर ले पाऊंगा. तो दैट्स व्हाई फॉर कंपनसेशन इफ ट्रांसफेरिन इज increasing its concentration, so in that respect the transferrin receptors will also be increased on the bone marrow cells. और जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा बोन मैरो के सेल के ऊपर एक रिसेप्टर, जैसे मान लो ये बोन मैरो की कोई सेल है और इसके ऊपर रिसेप्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही तो बढ़ेंगे, उसके बाद ये क्या कर जाएंगे, पेरिफेरल ब्लड में गिरने लग जाएंगे. और जितने ज्यादा बनेंगे उतने ही ज्यादा गिरेंगे, और जितने ज्यादा गिरेंगे उसको आप मेजर कर रहे हो बैठे बैठे, तो इसलिए आपको रिसेप्टर क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे. तो whenever there are more and more receptors present on the any cells, they will leak into the peripheral blood and you will measure their values. So usually blood में आपको रिसेप्टर नहीं मिलेगा. रिसेप्टर कब मिलेगा?
जब ये सेल के ऊपर से लीक करेगा। सेल के ऊपर से ब्लड में कब लीक करेगा? जब ये किसी सेल के ऊपर ज्यादा होगा। So that's why serum transferrin receptors will increase as a compensation for increased transferrin capacity. So that is a very important test that transferrin receptor A7 will be increased. मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको याद रह जाए। तो लास्ट टाइम तक जाते जाते ये सब मिक्स हो जाएंगे आपस में एक साथ, है ना? PIPC सैचुरेशन में घुस जाएगा और सैचुरेशन आपके ट्रांसफर रिसेप्टर में चला जाएगा। तो अगर समझ लोगे तो लंबे टाइम तक याद रखोगे। तो रिसेप्टर हो और TIPC हो, ये दोनों किसकी बातें हैं? ट्रांसफेरिन की बातें हैं। ट्रांसफेरिन अपनी कैपेसिटी बढ़ाई बट ये सैचुरेट नहीं हो पाए, और कैपेसिटी बढ़ाई इसीलिए जो भी बोन मैरो सेल्स है उन्हें अपने रिसेप्टर्स को भी बढ़ाना है। ओके, तो गॉट द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन आया था 2017 एग्जाम में। ओके, एक पेशेंट है जिसका सीरम आयरन लो है, सीरम आयरन लो है और फेरेटिन जो है वो हाई है। तो इज इट अ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इज इट समथिंग एल्स? हो सकता है ऐसा?